हेलो एवरीवन, वेलकम टू 74 ईस्ट। जैसा कि आप जानते हैं, कल बडगाम और नगरोटा दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इलेक्शंस होने वाले हैं, बाई इलेक्शंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की इलेक्शंस क्यों होने वाले हैं बडगाम के लिए, तो ये है कि बडगाम और गांदरबल दो सीट से सीएम चीफ मिनिस्टर रुहुल्लाह साहब ने इलेक्शन लड़ा था और दोनों सीट से वो जीत गए थे। सो ही हैड टू वेकेट वन, सो ही चोज गांदरबल ओवर बडगाम, तो बडगाम की सीट वैकेंट रह गई उस वजह से। और नगरोटा में ये हुआ कि देवेंद्र राणा साहब जो उनकी वफात हुई, उस वजह से नगरोटा इज़ ऑल्सो गोइंग फॉर बाई पोल्स। तो इन दोनों जगहों पे इस वक्त की जो हालत है, कल इलेक्शंस होने वाले हैं, व्हाट्स द मूड ऑन द ग्राउंड? वी हैव विद अस अजान जावेद. Azan, welcome. Hello. And thanks again for taking our time. Azan has been on the ground. He has been talking to people. He has been talking to the representatives of the political parties. So let's try to understand what's the mood on the ground and what are the different permutation combinations, the demographic divide and the vacancy, the incumbency or anti-incumbency. How is that all going to factor in the upcoming elections? How are the people going to vote? So let's jump straight into it. Azan, सबसे पहले हमें समझा दे, which all are the candidates and political parties that are in fray for tomorrow's elections at both the seats? So obviously, National Conference being the single largest political party in the assembly, it is again a larger party than others. It has, in fact, fielded Agha Mahmood. He is a veteran politician in the National Conference ecosystem, a known Shia leader from Budgam. From the PDP, it is Agha Muntazir, who is fighting. It will be his second election, if I'm not mistaken. He fought in 2024 as well. He lost to Ruhullah. He got quite a decent amount of vote, which we'll discuss further. So these two are the main contenders, as we said. But there are other candidates. For example, from the Bhartiya Janata Party, there's Agha Mohsin. There is a candidate from the Aam Aadmi Party as well, Deepa Khan. There are as well as someone from the Awami Ittihad Party has also fielded a candidate. There is another independent candidate. But all these players are basically they will definitely matter in the final mathematics of the elections. But they are smaller players as compared to the National Conference and PDP, which they are the main rival parties. If I'm not mistaken, Muntazir Mohiddin is an independent candidate. Again, a very important. He will definitely have some sort of a sway in the final polling numbers. And Nazir Khan, who has been a DDC member, he is, again, as I said, he's been given ticket from the Awami Ittihad Party, जो इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी जो खुद जेल में है आजकल. तो ये मेन नाम है. That's for Budgam. हाँ जी बिल्कुल. तो they're all from Budgam, and as we say कि कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नेकआउट नहीं करता है कि कौन जीते कौन नहीं है, तो हम भी वो क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं आज. बट from the surface ऐसा लग रहा है कि दो मेन जो फाइट है PDP और NC. I think we'll get into it, but if you can play a very important role. Exactly, but if you can also give us a landscaping of Nagrota constituency कि वहाँ कौन से candidates. बिल्कुल. Nagrota में it is obviously a very interesting political fight, but not as complicated as Budgam. वहाँ पे तीन main candidates है frame में. So from the Bhartiya Janata Party, it's Devyani Rana, who is the daughter of late Devendra Rana. As you rightly said, he passed away last year, and अब उनकी बेटी लड़ेंगी. She is fighting against a National Conference candidate named Shamima Ahmed. और उसके अलावा it's third person who will again make a considerable mark in those elections is Harshdev Singh. If you remember, he is related to being Exactly. Panthers Party. Exactly. A veteran politician who also passed away a couple of years back. So Panthers Party always used to be part of the government or would support the government. Important, smaller party of Jammu, but very important. Harshdev Singh has not been able to crack through in the electoral landscape of Jammu so far. He has not been able to kind of replicate what his late uncle did. But he definitely has his own followers and vote. तो उसका भी कुछ असर रहेगा. So thank you for this landscaping. But जैसा आपने बोला, तो we could understand that in Budgam seat, since major political parties से जो हैं the candidates, they're almost coming from the same family, so it's mostly going to be demographics and other things that are going to work in. But otherwise in Nagrota it's mainly going to be the political rivalry or the incumbency and anti-incumbency. So let's try to dig a little bit deeper, with a caveat that you said that nobody can say up
upfront that who's going to win, but we try to assess what's the mood on the ground, and since you have been on the ground, so let's first try to dive into the Budgam seat. What do you think are going to be the key factors for people to vote? And how are parties positioned currently, given the fact that Chief Minister has vacated this seat? Or because even when it was happening, when he had to vacate seat, there were a lot of discussions going on that should he vacate this or should he vacate Gandapal? Yes, exactly. So how is that also going to factor in with BJP, PDP, and National Conference effectively getting candidates from the same family? Would that kind of bifurcate or trifurcate the same vote consolidation that otherwise was there, because there is a demographic that is a demographic thing in the Budgam district? And lastly, I would also want you to come in, because it's a longish question, so we're excited. What's going to be the Ruhullah factor in all these elections? So as you rightly said, एक ही family है, so that's why I said that it's going to be a very complicated affair. ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स भी है और इश्यूज भी है. Okay. ठीक है, ऑन द सरफेस ये फाइट लग रही है आगा महमूद और आगा मुंतजर के बीच. ठीक है, which is NC and PDP. Which is NC and PDP. Aga Mahmood from National Conference, and but the intra-party dissent that has been going within the National Conference through Aga Ruhullah will play a massive role in the elections. But that does not necessarily mean that it is going to hurt the chances of National Conference. अभी जहाँ पे जो सेंस आ रहा है ग्राउंड से, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है पीडीपी को एज दिखाई पड़ रहा होगा, मतलब उनके जो एनालिस्ट, क्योंकि उनसे बात हो तो वो बोल रहे हैं कि हमें चांसेस है और ये सब है. बट इट इज़ मोस्टली बिकॉज दे थिंक कि पार्टी डिसरे में है. दे आर होपिंग दैट कुछ एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा. बट it is not 100% given that these are going to be the factors that will win them elections. See, I'll break down it in terms of numbers. So करीब वहाँ पे 1,26,000 वोटर्स हैं. ठीक है, उसमें से पिछले इलेक्शंस में Umar Abdullah, if I'm not mistaken, Umar Abdullah was fighting from the National Conference, और उनको 36,000 से ऊपर वोट आया. ठीक है, और उसी मुकाबले जो उनका सेकंड कंपटीशन था आगा मुंतजर, उनको 17,500 वोट्स थे. टोटल वोट्स जो पोल हुए थे 66,000. सो this is a massive number. Out of 66,000, if you're seeing National Conference को 36,000 है, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी. But this is again at a time when there were other factors at play. Exactly. बीजेपी को हराना था या whatever जो factors थे. तो अभी थोड़ा डिफरेंट है. अभी डिफरेंट है कि एंटी इनकम्बेंसी का क्या रोल रहेगा इस पे. ये नंबर्स शायद रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इसके अंदर. एंटी इनकम्बेंसी का कुछ ना कुछ असर तो रहेगा, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी को लेके. बडगाम में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा मसला है. ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेट फर्दर हो चुका है बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ गेटिंग स्मार्ट मीटर्स. So there is quite a opposition to smart meter, and National Conference has given their explanation कि हम जी 200 units लगाने free electricity देंगे 200 units तक, तो we can only gauge that if you have meters, so we'll know कि 200 है. वो एक argument है, but this was according to a lot of people in Budgam, this was not discussed, it was not as put forth by the National Conference before the election. Exactly. उस वक्त स्मार्ट मीटर्स और ये सब इतना डिस्कशन में था ही नहीं, तो अभी है. तो ये एक मान लीजिए कि एक इशू है. लेकिन जो मेन पॉलिटिक्स जो प्ले आउट हो रही है वो आगा रूहल्ला के थ्रू ही हो रही है. जैसा कि मैंने कहा कि जो ये फैमिली है, आगा फैमिली जो हम बोलते हैं, ये डिवाइडेड है. ठीक है, नॉट स्ट्रिक्टली ऑन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लीनिंग्स एंड ऑल, बट बिकॉज ऑफ द फैमिली जो क्या बोलते हैं उसको, जो फैमिली के जो नेचुरल जो डिविजन्स होते हैं बेसिकली इन अ सेंस के अंकल्स के बीच में उसके, तो कुछ फॉलोवर्स एक अंकल के हैं, मान लीजिए एक सन के हैं, और कुछ फॉलोवर्स इस सन के हैं. तो इट्स नॉट लाइक वो खतरनाक राइवलरी ये है, बट दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स एट दैट लेवल. तो मुस्तफ़ी एक है और मोहम्मदी एक फैक्शन है. तो इनके अपने वोट्स है, और जैसा कि मेरा आइडिया है कि इसमें जो मुस्तफ़ी वोट जो है दे एक्सीड द मोहम्मदी वोट्स. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मुस्तफ़ी जो है, रिमेंबर ये आगा मुंतज़िर
belongs to this. Okay. I will not call it a sect, but let us just say To this branch of the family. yeah, this branch of the family, very rightly put. तो 20,000 votes around है, this is the estimate. और उसी के मुकाबले जो मोहम्मदी है वो 8 से 10,000 के बीच में. Okay. तो इसका मतलब 10,000 वोट्स आगा महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के गारंटी तो थे ही है, मतलब है ही. अब जो ये 20,000 वोट्स हैं जो रूहुल्ला और मुंतजर वाले फैक्शन से हैं, ये कैसे प्ले आउट करेंगे? क्या ये डिवाइड होंगे, नहीं होंगे? क्योंकि याद रखिए आपकी रूहुल्ला हैज डिसाइडेड नॉट टू कैंपेन फॉर द नेशनल कॉन्फ्रेंस. एज वी सेड वी विल डिस्कस इट आल्सो, क्योंकि आपको कुछ और भी सवाल होंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ वो. लेकिन फिलहाल मैं आपको नंबर्स का बता रहा हूँ कि नंबर्स कैसे प्ले आउट हो सकते हैं. और नंबर्स ये है कि वो 20,000 वोट बटेंगे. ठीक है. इसमें एक और फैक्टर है कि ये बटेंगे, तो डज इट मीन दैट दे विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू पीडीपी वोट्स? I personally don't think so. ठीक है. There might be some votes that can be translated into PDP votes, but not all. There is another candidate in the fray, as I mentioned very early, an independent candidate, Muntazir Mohideen. वो भी कुछ वोट काट सकता है और वो इसी में से कुछ वोट काट सकता है. रिमेंबर ही इज अ सुन्नी कैंडिडेट, तो उसके अपने वोट भी होंगे. बट इफ ही आल्सो गेट्स इनटू दीज 20K वोट्स, ही कैन आल्सो I will not say prove as a challenge, but definitely will complicate things much more than they are right now. Sorry, यहाँ पे to cut you, because ये बड़ा important यहाँ पे understand करना भी है और कराना भी है, जो सारे सुन रहे हैं, that why we are discussing this so deeply, because बडगाम ट्रेडिशनली जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी रही है जहाँ शिया वोट ने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा. दैट इज वाई प्रोबेबली इतना डीप डाइव इसमें करना जरूरी है कि ये वोट कहाँ की तरफ. हाँ देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे शिया पॉपुलेशन है वहाँ पे. बट इंटरेस्टिंगली, जस्ट लाइक हाउ रूहुल्ला वाज in the Lok Sabha elections, both Sunnis and Shias voted him to power, right? तो बडगाम also does that. वहाँ पे सुन्नीज जो है वो शिया लीडर्स के पीछे रैली करते हैं, क्योंकि that is also a party vote, पार्टी कार्डर का वोट है. तो वहाँ पे शिया कैंडिडेट्स एमएलए बन के आए हैं, not only based on these two factions, but also due to the Sunni vote, right? So that's why it's more interesting वहाँ पे. तो लेकिन जो मैथमेटिक्स अभी है, जो हम ये इस वक्त जो हमें ये लग रहा है एडवांटेज, इसमें क्लियर कट एडवांटेज तो डेफिनेटली नहीं निकल के आ रहा है इसके अंदर. ठीक है. तो आगा महमूद के अगर 8 से 10,000 खुद के वोट है अपने फैक्शन के, अपने ब्रांच ऑफ फैमिली के, तो उसको पार्टी वोट भी मिलेंगे, कुछ कार्डर वोट भी मिलेंगे उसको. ठीक है. और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यू वोटर्स भी होंगे जो पिछले बॉयकॉट के साथ थे या कुछ थे, वो भी हो सकते हैं. सो ही डज हैव अ क्लियर एज. ऑन द अदर साइड, पीडीपी डज नॉट हैव अ मैसिव बेस इन बडगाम. ठीक है. बहुत बड़ी उनकी बेस नहीं है. Traditionally, Budgam has been national conference, right? Clearly, जो last elections it proved it कि 17,000 वोटिंग मिले उनको और उनकी जो नैन्सी को डबल मिले. तो अगर वो बैंक करते हैं आगा रूहुल्ला का absence from the campaigning or tacit support to Muntazir, which is not the case from what I gather. Okay. Which is not the case. But if they rely on that also, will it be enough for them to win? I don't think so. So मेरा अंदाजा है, जो आपके जो ये 1,25,000 वोट्स है, मेरा अंदाजा है कि 25 से 30,000 वोट्स तक आने चाहिए for someone to win. Okay. Numbers ऐसे बनते हैं. Okay. And this includes the Mustafai, the Mohammadi, the Sunni votes, the other party votes, PDP votes. ठीक है. ये सारे वोट्स का जो 2+2, 3+3, ये सारा करके मैं आपको बता रहा हूँ कि 25,000 वोट्स अगर आपको मिल रहे हैं, you are definitely having an edge over the other candidates. Just to add, यहाँ पे जहाँ पे आपने PDP की बात की रहा है, so how much is anti-incumbency जो हमें अब एक साल में होता देखा हुआ है, how much is that going to help, or how much is that a big factor in Budgam elections, and is it going to help PDP in that sorts? Anti-incumbency definitely एक factor है. In terms of इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा इशू है. बडगाम में रोड भी बहुत बड़ा इशू है. वाटर सप्लाई भी कुछ जगहों पे इज अ मेजर इशू. बट इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है जो पूरे कश्मीर इशू है, और बडगाम में तो खासकर ज़्यादा ही है. बट पीपल ऑल्सो realize that this government is not as strong as what it used to be when it was a state, and when the state had Article 370.
Now, that can be an advantage as well as a disadvantage. Advantage in the sense that they know कि ये इतना नहीं कर सकते, तो they will limit their expectations, right? But disadvantage कैसे हो सकता है? Because what PDP has been able to do very successfully in the assembly sessions is grab the headlines, right? They have been able to grab the headlines, and what PDP is doing is activism inside the assembly and all. So what people would hope is that if the government is not able to negotiate for better better lifestyles for themselves, which includes everything. So the second best thing is have someone who will at least be like an activist figure and who will force the government to do these things, or in bare minimum make these issues heard in the assembly, right? Exactly. And that is why they see Aga Muntazir being someone the face. Now, interestingly, one thing that we need to also discuss is Aga Muntazir's own history is वो तो अभी PDP से उतरे हैं, but he belongs to essentially a family which is not completely mainstream. उनके जो father है आगा हसन, he is the head of अंजुमन शरियान, ठीक है? तो उनकी एक अलग history है, उनकी एक अलग political leaning रही है. So again, why I'm bringing that up here is again very activistic. So this candidate is not only being chosen because he is from the Aga family and all, but also of the politics, because PDP has been accused by the National Conference and the Bhartiya Janata Party, mostly by the Bhartiya Janata Party, of catering or pandering to soft separatism or the separatist circles in Kashmir. So I will not say Aga Muntazir is soft separatist or is a separatist, but his background, his father's background at least, is that of a very different political leaning that he is currently in सिस्टम में आज है. बिल्कुल. तो इसलिए वो उम्मीद रहेगी लोगों की, और वहाँ पे वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर प्ले हो सकता है कि हमें कौन बंदा चाहिए वहाँ पे. Exactly. So let's now go to the big question about Ruhullah. So he's not actively campaigning. I mean, जो उनकी tacit messaging भी थोड़ी सी लग रही है. We can directly call it anti-NC, but if you can read between the lines, it looks like that what he's trying to convey to the voters who he tries to influence or is influencing, that they need to be wiser this time. So I mean, if you see that, if you try to draw an inference, it looks like those voters who he is referring to might go the other way or a completely different way, the non-NC way. So how big a factor is that going to be in the elections tomorrow? I think आगा रूहुल्लाह जो लोग supporters हैं और जो detractors हैं, both, and this is not coming from a place of bias, but I personally believe that Aga Ruhullah, the politics of him, is a kind of a phenomena that we are not able to understand right now. And why is that? Because वो एक ऐसी voice है national conference के अंदर which can completely change the national conference. And why national conference is so important to Kashmir is because simply it is the oldest party of Jammu and Kashmir. Exactly. It's the largest party of Jammu and Kashmir. It has been signatory to everything that has happened in Jammu and Kashmir, good or bad. And what happens to national conference it is not like that a party in Maharashtra is impacted, उनके दो हिस्से होते हैं, and then the state goes on and moves on. This is very different because national conference की identity इतनी embedded है जम्मू और कश्मीर के साथ, so it becomes very imperative for us to study why is this dissent coming from, what is this reasons क्या इसकी. So I want to we can have a separate discussion on Aga Ruhullah, to be honest, but I'll give you tell you very briefly is that his dissent did not start with this reservation issue, because आजकल वही न्यूज़ में आ रहा है. His issue started with after the abrogation of Article 370. वहाँ से उसको लेके issues हुए, जब elections में उतरे वो लोग, उसमें जो DDC के polls हुए थे, he had issues with that. So there has been a massive build up to his dissent, and he from what I understand is he believes that national conferences politics should be more activisty, more confrontational, and that is not happening. And this activisty in terms of ideology, in terms of logistical works of the government and everything, right. And he believes that नहीं हुआ है, तो अब कुछ जगहों पे बड़े issues बन रहे हैं. तो जब already इतना friction है,
तो कुछ इश्यूज पे आपको वो दिखता है कि इस पे ज्यादा निकाला, तो रिजर्वेशन बीइंग वन. सेकंड is the elections. So from what my understanding is and what we have learned so far is that because Aga Ruhullah is the member of parliament from Srinagar, he cannot obviously he couldn't have fought this election. He could have, I mean, if he would resign or not, but वो वहाँ पे है, तो यहाँ पे वो अभी वो इलेक्शन चाह रहे थे बेसिकली कि एक ऐसा कैंडिडेट आ जाए कि अगली बार अगर वो उनको इलेक्शन उतरना पड़े बडगाम से, that the candidate who would have won this time would not pose as a challenge to Aga Ruhullah in Budgam. Exactly. ठीक है, it's उनका अपना टर्फ है, वो जीते मल्टीपल टाइम्स वहां से जीते, तो वो चाह रहे थे कि ऐसा शख्स हो कि वहां पे है. और फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम, दिस इज नॉट फ्रॉम Aga Ruhullah's perspective, फ्रॉम विद इन द एनसी, वो बोल रहे थे कि he was preferring a Sunni candidate. कि कोई सुन्नी कैंडिडेट हो. और जितना हमने सुना था कि वो नासिर असलम वानी जो एडवाइजर है होमरुल्लाह की, उनकी बात उठी थी, और देयर वर कपल ऑफ अदर नेम्स आल्सो, बट मेनली उनका था, तो वो हुआ नहीं उनका. तो इसलिए जो मैंने आपको नाम जिक्र किया मुंतज़िर मेहदी, सॉरी मुंतज़िर मोहिद्दीन का, मैंने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो इसलिए उनको खदशा है एनसी में कुछ सर्कल्स में कि क्या वो टैसिटली इनको ये करेंगे. बट आई डोंट थिंक, मेरा पर्सनली नहीं लग रहा है कि इट विल बी अ मैसिव फैक्टर. बट वोट तो कर सकते हैं, बट क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं टैसिटली या ओवरटली, आई कांट बी वेरी श्योर ऑफ इट. ठीक है, बट ही हैज टू समवेयर शो दैट his boycott of the campaigning process has impacted. Right. So for that maybe he might show some hand कि देखो जी मैंने इतना किया. But I'll tell you in a little bit more detail अभी जाके. तो ये मसला आ जाएगा Aga Ruhullah का वहाँ पे कि वो क्या ट्रांसलेट हो पाएगा का इसके पीडीपी में. मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन इट इज अ catch-22 फॉर हिम. वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर आगा मुंतजिर जीतता है ये इलेक्शन, अगेन सेम फैमिली, दे आर रिलेटेड, तो अगली बार के लिए इट विल बी डिफिकल्ट फॉर रूहुल्ला टू. एग्जैक्टली. ठीक है, सो आगा रूहुल्ला कैन नॉट कंप्लीटली कैंपेन फॉर आगा मुंतजिर. ठीक है, he cannot completely campaign for Aga Mahmood as well, because then what is the point? Then everything is a drama, right? तो उनको वो नहीं कर सकते हैं. तो वहां पे कौन बचता है बड़े नाम? उसमें से आपके एक दो नाम ही आ जाते हैं. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुंतज़िर मोहिद्दीन, बिकॉज आपको मैं ये बोलता चलूं कि मुंतज़िर मोहिद्दीन के 2014 की परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड इन द इलेक्शंस. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक अबाउट 20,000 वोट्स थे उनके. सो तो उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है. लेकिन इस बार बिकॉज ही इज अ सुन्नी कैंडिडेट, विल ही परफॉर्म द सेम विद द इंट्रा पार्टी राइवलरी? दैट इज नॉट, दैट इज द थिंग. लेकिन इनको अगर 5,000, 8,000, 7,000 वोट आते हैं, द एनसी विल नो दैट आगा रूहुल्ला हैज डन दैट डैमेज. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है. तो पीडीपी शुड नॉट ऑनेस्टली अभी इतना सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए उनको कि वो ट्रांसलेट होंगे. आई थिंक वी स्टिल there's still long way to go. Okay, but I think tomorrow we'll get to know how, at least at a voter level, we'll get to understand that how the voters from Budgam will navigate between these factors, and ultimately what prevails in their mind at the time of clicking the buttons. But let's go to switch to Nagrota. I mean, we understand that it's not going to be these many factors and this many mix, but obviously a seat, after all, is a seat. A contestation is there. A political parties. One is that, kindly tell us about Nagrota. That what kind of a competition is there, and the second question for both seats, that how are these by-elections important or not important in the larger context? It's a very important question. So let's first take the Nagrota part. I would just make a slight correction in it. The Nagrota election abhi is not as interesting as Budgam, but what happened before the election was extremely interesting. Okay. अगर आपको याद होगा कि राज्यसभा पोल्स जब हुए यहाँ पे, तो कांग्रेस और एनसी के बीच में थोड़ी गहमा गहमी हुई. कांग्रेस चाह रही थी कि उनको सेकंड सीट मिल जाए, जो शॉर्ट विक्ट्री होती. दे वांटेड वन सीट इन द राज्यसभा फॉर देमसेल्व्स आउट ऑफ द 4. इवेंचुअली एनसी won 3, बीजेपी won 1. तो कांग्रेस would have wanted 1. Numbers would have been 1 Congress, 2 NC, and 1 this thing. But the entire whoever we spoke to NC, they were quite angry with the Congress, because Congress उनका ये कहना है कि एक तो ये टोटल जितनी सीट्स जीतनी चाहिए थी उनको वो जीत नहीं पाए.
जम्मू में उल्टा इन्होंने प्रोस्पेक्टस खराब की, जितनी सीट्स इन्होंने ले पाए हैं वो ज्यादातर कश्मीर से लिए हैं, ठीक है। जम्मू में वो परफॉर्म कर नहीं पाए, वहां पे इन्होंने कैंपेनिंग नहीं की अच्छे से, दे वर ऑलरेडी एंग्री दैट द एनसी रियली बिलीव्स and from what we also covered, we thought that if NC and if the Congress would have done a good job in Jammu, I think they could have restricted BJP under 20. And this is not coming from me. Several senior BJP leaders before the elections were saying that Jammu can be a tricky situation. हाँ, बहुत tricky हमारे होता है. Eventually, what happened? BJP won 28 from Jammu. Right? They were quite happy with the performance. And ऑलरेडी ये था बैकड्रॉप में. उसके बाद राज्यसभा में इन्होंने फिर से डिमांड की कि आप जी आपके 6-7 एमएलए हैं, उस पे ऊपर आपको सीट चाहिए वो वगैरह. उस पे हुआ ऑलरेडी. देयर आर पॉलिटिक्स बिकॉज व्हाट आई हर्ड इज दैट द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज विलिंग टू गिव अ वन मिनिस्ट्री टू द कांग्रेस despite having lesser seats. They are saying कि आप ये ले लीजिए because it's a national alliance actually. तो आपको वो देखना है. दिल्ली में alliance important है ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा, तो वो उसको नजर में रख के उमर अब्दुल्ला या एनसी मूव करता है. और उनका ये कहना था कि ठीक है इनको मिनिस्ट्री देंगे, लेकिन evidently there is some intra Congress rivalry playing that, तो उनको नहीं मिल रहा है. तो they are now supporting the government, not officially part of the cabinet, right? तो ये सब चल रहा था. अब जब राज्यसभा में उनको स्नबिंग हुई तो देन दे डिसाइडेड, द कांग्रेस डिसाइडेड कि अब हम जम्मू में नहीं लड़ेंगे, नगरोटा में नहीं लड़ेंगे. अगेन सरप्राइजिंग नहीं, आई मीन वो लड़ते भी तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू विन बिकॉज दिस इज ट्रेडिशनल सीट टू देवेंद्र राणा हु वाज अ veteran national conference leader. In the last few years of his life he switched to the Bhartiya Janata Party. ठीक है, but he as all of us reporters know him as the extremely close aide of Umar Abdullah, or is very good friends with the family, मतलब बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनकी फैमिली के, but also a very important voice in the national conference as well as an important voice in the Abdullah family with him. So very important figure for the national conference. Eventually वो चले गए, कुछ statements हुए, यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए. Eventually when he passed away, Umar Abdullah gave a very emotional speech and in the assembly and all. So वो सब हुआ. तो लेकिन कांग्रेस का डिसाइड होगा कि वहां पे ये नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे. एंड दे मेड इट आउट कि हम एनसी को मौका दे रहे हैं, आप ही जीत जाइए वहां पे. तो एनसी ने एक कैंडिडेट खड़ी कर दी जिसको पीडीपी और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं रीजन वो बोल रहे हैं कि इन्होंने जी वीक कैंडिडेट खड़ा कर दिए, क्योंकि वहां से वो बहुत बड़ा नाम है. वहां से क्या है, वहां से देवयानी राणा उनका पहला इलेक्शन है, बट शी हैज द सिंपैथी फैक्टर, द ट्रेडिशनल वोट बेस ऑफ देवेंद्र राणा. ठीक है, एंड देन ऑल्सो herself, her profile is quite nice. Okay. She good orator. She says the right things basically. So Nagrota में pretty much. It's very interesting. Okay. It's very interesting. तो अब वही चल रहा है कि एनसी के ऊपर तो मत लग रहा है कि आपने जी वीक है, तो इसका मतलब मिली भगत है. But that is between the political parties. But as far as elections is concerned, there is what you're trying to tell us is that the mood on the ground, or our understanding is that it's going to be the Rana family again. They definitely have an edge. Okay. I personally think they definitely have an edge. या तो फिर कोई एक ऐसी invisible anti-incumbency and she will have to pull off a anti-incumbency towards the center. Okay. Jammu BJP leadership, I don't think, obviously वो तो गवर्नमेंट में नहीं तो anti-incumbency का सवाल नहीं होता है, but या तो कुछ एंगर बीजेपी एट लार्ज पे तब कुछ ऐसा निकला है. अदरवाइज आई थिंक sympathy factor alone should take her clear and land in the assembly. And I think, Azan, we are moving towards the last section of this thing, and there is this one thing: these by-elections are happening. Important? How much are they important? Yes. What is it going to do to the overall structure of the government and administration and in Jammu and Kashmir? So kindly throw some light so that people understand that why is it important? Why are these by-elections important? Personally, I think it is again very symbolic. So for people in Budgam, it is important because local representative है, कितना access है. क्योंकि देखिए उमरुल्लाह को उनका लोगों को ये भी गुस्सा है इसमें कि इसने ये वेकेंट कर दी है सीट, और वो गांधरबल से गए. उसके बाद वो हार्डली कभी गए हैं बडगाम वगैरह इससे पहले, एंड एरिया निगलेक्टेड है. तो वो है. तो अब इसके बदले उमरुल्लाह ने बयान दिया कि मैं आप लोगों के लिए जी क्रिकेट स्टेडियम लाऊंगा यहाँ पे, एंड मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब करूंगा. एंड देन देयर वाज आल्सो अ सॉफ्ट काइंड ऑफ अ थ्रेट कि देखो आपको हमारे पास ही आना है काम करने के लिए. किसके पास जाओगे, वही पर ये सब जो लोग हैं वहाँ पे. इवेंचुअली इट इज द गवर्नमेंट वेदर. ठीक है, तो ही इज
वेरी ट्रिकी। आपको ये भी पता होगा कि सुनील शर्मा जो है एलओपी है, बीजेपी के लीडर है, उन्होंने उनको बोला कि आप कुरान पे हाथ रख के बताइए कि आपने इलेक्शन बीजेपी अलायंस के लिए नहीं मांगा था। उन्होंने कहा कि मैं 24 में नहीं मांगा। वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज what will be the election's importance for the People's Democratic Party, a party which has lost all major elections since 2019. आपको याद होगा कि 19 में हारे, 24 में हारे, their performance in the assembly elections were dismal. ठीक है, जो ऐसा ख्याल आ रहा था कि इल्तिजा मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं वो अब carry forward करेगी पार्टी को, लेकिन she also lost a lot of big names of the PDP could not perform well. तो उनके लिए भी ये बहुत important elections है to kind of establish that they are still in the fray. ठीक है, जैसा कि आपको पता है उनके 3 MLAs हैं टोटल असेंबली ऑफ 90 के में, तो एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेफिनेटली इट सेंड्स अ मैसेज दैट दे स्टिल आर द सेकंड बिगेस्ट पार्टी अभी कश्मीर के अंदर, because obviously second biggest is the BJP here, right. But Kashmir ke andar they are the second biggest party, and they can prove troublesome and a challenger for the national conference when they kind of mobilize well. Well, exactly. Thank you Azan, thank you for all the insights. Well, it needs to be seen kal jab people will come out to vote in Budgam and in Nagrota, we'll get to understand ke, and as I said, they'll have to navigate through all these factors and finally which one prevails. So kal hi pata chal jayega, but we'll again probably after the elections are done and close to the results, we'll again convene a discussion on how it went, what is the review, what is the understanding. So till then, Azan, thank you again. Until then, bye bye and over and out.